Hello children, once again I welcome you all to my YouTube channel, and today we'll be discussing another very important topic related to the writing section for class 10 Cbse, and that is letter writing. My dear children, as we all know that two types of letters are there, formal and informal. And informal letters I have already discussed, and that is something I have already uploaded a video on that. But today we'll be discussing about formal letters, and this formal letters is a part of class 10th as well as class 11th English syllabus. So it would be useful for class 11 students also. So let's discuss this letter writing. As I told you that we'll be discussing about formal letters only. So a formal letter is one that is written in a formal and ceremonious language and follows a certain stipulated format. Such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc., and not to personal contacts, friends or families. So the formal letter is basically is written in a very formal language and ceremonious language. When I say ceremonious language, it means excessively polite, or in other way, especially these type of letters are written for formal occasions. So that is what this ceremonious word is all about. And while writing a formal letter, we need to follow a stipulated format. We are restricted. We cannot write in our own way. There is a proper format, and we have to follow that format very strictly, and that is called stipulated format. Such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc., and not to personal contacts, friends or families. So under these formal letters, we are not supposed to write letters to the friends or family members or any other relatives or anything else. And these type of letters are written to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, maybe to your boss, etc. Okay, so that is what formal letters are all about. Now we'll discuss about the types of formal letters. The formal letter is of various types and is used in all organizations, government or private, as a means of communication. Formal letters are used for internal as well as external communication. The type of formal letters are mentioned below. So my dear children, this formal letter, these type of letters are used in government as well as private organizations. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे लेटर्स लिखे जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वहाँ पर भी लिखी जाती हैं. और फॉर्मल लेटर्स जो हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है. इंटरनल मीन्स अपने ऑफिस के अंदर ही आप अपने बॉस को लेटर लिख रहे हो और अपने से बड़े अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, तो वो एक इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आप बाहर किसी को लिख रहे हो, दूसरे कंपनी के बॉस को लिख रहे हो, या अपने दूसरे कंपनी से कोई काम है, आपको कोई रिलेटेड वर्क है, तो उस सेंस में आप लिख रहे हो, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. सो वी हैव दिस लेटर ऑफ इंक्वायरी, वी हैव दिस ऑर्डर लेटर. ऑर्डर लेटर मीन्स जिसे हम प्लेसिंग एन ऑर्डर भी कहते हैं. लेटर ऑफ कंप्लेंट भी है, रिप्लाई टू ए लेटर ऑफ कंप्लेंट है. ओके, देन प्रमोशन लेटर. ठीक है, प्रमोशन लेटर जहाँ पर जो है सबऑर्डिनेट्स को या फिर सीनियर जो ऑफिशियल्स होते हैं या जो बॉस होता है, बॉस की तरफ से प्रमोशन लेटर दिया जाता है अपने जूनियर्स को कि आपका प्रमोशन हुआ है. ओके, देन सेल्स लेटर्स, सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है या तो अपने अथॉरिटीज़ को, सीनियर अथॉरिटीज़ को, या सीनियर अथॉरिटीज़ जब अपने जूनियर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए लिखते हैं, सो वो सब सेल्स लेटर्स हो गए. रिकवरी लेटर्स क्या होते हैं? रिकवरी लेटर्स बेसिकली ये वो लेटर्स होते हैं जैसे कि किसी ने लोन लिया है और वो लोन चुका नहीं पा रहा, इन दैट केस कंपनी जो एक रिकवरी लेटर इशू करती है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ जो लोन जो है रीपे नहीं कर पा रहे. सो दैट टाइप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड रिकवरी लेटर्स. लेटर टू द एडिटर, सिंपल हम जानते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना.
और भी लेटर्स हैं जो कि बहुत डिटेल में चले जाएंगे, बिजनेस लेटर्स जैसे हम कहते हैं. सो बट यू नो ऑन एन specifically we'll be discussing about a few letters, and just I have highlighted a few types of letters that fall under the category of formal letters. So this is what types of formal letters are. Now we will go for the format of a formal letter. A formal letter को लिखने का format क्या है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट को फॉलो करना है हमें, और हम अपनी मर्जी से फॉर्मल लेटर्स नहीं लिख सकते, अन्यथा हमारा जो लेटर है उसका एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा जिसके लिए भी हम लेटर लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लेटर्स एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं. तो इट्स बेटर टू फॉलो दैट फॉर्मेट वेरी स्ट्रिक्टली. ठीक है, तो लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर. एज यू see on your screen, this is actually the format. So the very first thing what you will write is आप लिखोगे अपना एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, द पर्सन हु इज सेंडिंग द लेटर, द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, उनका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा. ओके, हिज एड्रेस शुड बी मेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर. वहाँ पर आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, लाइक इट इज रिटन हियर 23/B, अशोक नगर, न्यू दिल्ली. देन यू विल लीव वन लाइन, देन यू विल मेंशन दी डेट. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं तो कोशिश करिएगा कि 2 लाइन में सेंडर्स का एड्रेस आ जाए. देन लीव वन लाइन, देन यू मेंशन दी डेट, फिर डेट को मेंशन करिएगा. डेट को भी मेंशन करने का एक प्रॉपर वे है, एज इट इज़ मेंशन हियर. डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स 23/7/2020, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना अच्छा भी नहीं लगेगा वो. बेसिकली उसका इतना अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा. तो यू बेटर राइट इट इन अ ब्रॉड वे, इन दिस वे. देन लीव वन लाइन एंड देन यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस. जिनको पत्र भेजा जा रहा है, लेटर जिनको भेजा जा रहा है, उनका पता होगा. तो यहाँ पे तो हमने एक एडिटर के लिए फॉर्मेट हम आपको दिखा रहे हैं, बट कोई और कुछ और भी हो सकता है, वो दैट्स नॉट अ बिग डील. सो द एडिटर, then the Times of India, the name of the newspaper, then the place. Okay, this is the format. Then please remember one thing, when you write these type of letters, especially make sure जो first जो letter है word का वो capital रखिए. जैसे यहाँ पे देखिए the editor, तो the का T capital है, editor का E capital है, तो इस तरीके से आप जो है capital word रखिएगा. Then leave one line, then come to subject. and subject में आप लिखोगे क्या विषय है, किस विषय के संबंध में आप ये पत्र लिख रहे हो, क्या वजह है पत्र लिखने की, दैट यू हैव टू मेंशन इन द सब्जेक्ट कॉलम. एंड देन लीव वन लाइन एंड देन यू विल राइट द सैल्यूटेशन, डियर सर ऑब्लिक मैडम. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू माय डियर चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट नेसेसरी यू गो फॉर द वर्ड डियर. ज़रूरी नहीं है कि डियर वर्ड लिखना ही लिखना है, आप डियर वर्ड नहीं भी लिख सकते, नॉट अ बिग डील. आप सिर्फ सर लिख सकते हैं, और मैडम लिख सकते हैं. ओके, इन सम केसेस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वेदर द पर्सन whom you are writing the letter is a male or female, अगर आपको नहीं पता जिसको आप पत्र लिख रहे हो क्या वो मेल है कि फीमेल है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर बोथ द वर्ड्स सर ऑब्लिक मैडम. ओके, नॉट अ बिग डील, आप ऐसे भी कर सकते हैं. And then after writing the salutation comes the body of the letter. वहाँ पे भी आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर body of the letter आप मेंशन करेंगे. ठीक है, अब body of the letter में मैं आपको बता दूँ ये मेन लेटर होगा, और बेसिकली हम इसको कोशिश करते हैं कि 3 पैराग्राफ्स में ख़त्म कर दें. जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप अपनी बात रखते हो. देन इन द सेकेंड पैराग्राफ आप मेन कंटेंट मेंशन करते हो, जो प्रॉब्लम है या जो मेन आपका जो इशू है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप डिटेल्ड वे में लिखते हो. एंड देन कम्स द कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूजन आप लिखते हो. ठीक है, सो बेसिकली हम 3 पैराग्राफ्स में जाते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू एंड योर फॉर्मल लेटर और यू हैव टू एंड अप using only 3 paragraphs. In some cases it may go up to 4 paragraphs also, but make sure that you follow this. So that is what you have to mention. Then leave one line, then you will write thanking you. Okay, and then again leave one line, yours faithfully, and that is called the complimentary close. Okay, and then comes the sender's name, जो भी आपका नाम है. तो ये है basically format. तो अब एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि वंस यू राइट दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली या ट्रूली आप लिख सकते हैं.
बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं, योर्स में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, but that is wrong. You're not supposed to put that. Okay, so you simply have to write yours faithfully oblique truly. Remember one more thing, उसके नीचे फिर आपको लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पर चूंकि ऐसा उसमें आपको शो हो रहा है लाइन चूँकि स्पेस है, बट देर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड स्पेस आफ्टर राइटिंग योर्स ट्रूली, और तुरंत नेक्स्ट लाइन में आप जो है सेंडर्स नेम लिख सकते हैं. यहाँ पे चूँकि आपको समझाने के लिए उसे जो है एक सीक्वेंस में रखना पड़ा, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, बट यू आर नॉट सपोज टू provide a space. So this is actually the format of a formal letter. We'll start from sender's address, then date, then receiver's address, then we'll have the subject, then we have the salutation, then we'll mention the body of the letter, then comes the complimentary clause, and at last comes the sender's name. Now we'll see one example of formal letter. So as I told you that we'll be discussing letter to the editor and letter of complaint, letter of inquiry, placing an order, but you know, right now we'll be going for letter to the editor. Now the question is in front of us. You are Amar Sheila, a resident of 23 Mayur Vihar, New Delhi. You are concerned about the water logging in your area during rainy season. Write a letter to the editor of a newspaper highlighting the need to improve the condition of roads. So basically आप अमर या शीला हो, अगर बॉयज़ हैं तो वो अमर नाम को लेंगे और गर्ल्स हैं तो वो शीला नाम को लेंगे. और आपका जो ये इमेजिनेटिव एड्रेस क्या है, 23 मयूर विहार है ना. तो ये एक एड्रेस आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, आपको यही एड्रेस लिखना भी है. तो 23 मयूर विहार न्यू दिल्ली आपका एड्रेस है. और प्रॉब्लम क्या है, यू आर कंसर्न अबाउट द वाटर लॉगिंग इन योर एरिया. और आपके एरिया में क्या हो जा रहा है कि पानी जमा हो जा रहा है, पानी इकट्ठा हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, पानी जो है निकलने का सिस्टम नहीं है पानी का. और इसके संदर्भ में you have to write a letter to the editor of a newspaper. Now here it is written editor of a newspaper, but the name of the newspaper is not given. So in that case आप क्या करोगे, कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करोगे, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. विल गो विद दिस फॉर्मेट. जैसे मैंने देखा, पहले सेंडर्स एड्रेस है ऊपर 23 मयूर विहार न्यू दिल्ली, फिर देन लीव वन लाइन, देन राइट द डेट 29 July 2020, leave one line, then the editor, the हिंदुस्तान न्यू दिल्ली. द हिंदुस्तान हमने लिया, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं, द हिंदू ले सकते हैं, ये सब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नाम हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर, डोंट गो फॉर दीज टाइप ऑफ नेम्स. दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं और इनका नाम बिल्कुल भी मत लिखिएगा. सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो बेहतर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम मेंशन करिए. या फिर अगर क्वेश्चन में कोई न्यूज़पेपर का नाम दिया देन यू कैन गो विद दैट. And subject is what? Complaining about the water logging in our area. So the problem is what? Water logging. Okay, now we'll discuss this question. Dear sir, through the columns of your reputed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the problem of water logging in our area. Now this is the intro part. जो बॉडी पार्ट हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट में, बॉडी पार्ट में इंट्रो पार्ट है, पहला पैराग्राफ. और पहला पैराग्राफ में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारी, बस. ठीक है, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट थ्रोइंग सम लाइट ऑन द प्रॉब्लम. सो बेसिकली कोशिश करिए कि आप इस तरीके से ही स्टार्ट करिए जब भी आप कोई लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर और थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, दैट वुड बी फाइन. आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. During the rainy season, there is water logging everywhere, which makes it difficult for the commuters to walk or ride their bicycle or car even. अब आप in the second paragraph, what is happening? Now you are mentioning your problem in a detailed way. Okay? अब आप एक विस्तार से अपनी समस्या बता रहे हैं उनको. क्या समस्या आपकी? That during the rainy season, there is water logging everywhere. हर जगह पानी इकट्ठा हो जा रहा है. Which makes it difficult for the commuters, ठीक है ना, और राहगीरों को, आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जा रही है. Even to walk, चलना भी दूभर हो गया है. Ride बाइसिकल, साइकिल भी नहीं चला पाते. और कार, मतलब इतने ज़्यादा पानी भर गया है कि ना कार चलाया जा सकता है, ना साइकिल, ना पैदल चलाया जा सकता है. There are potholes on the road which further lead to accident. अब एक और समस्या क्या है कि छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं उसमें,
और उस गड्ढों में पानी भर गया है, समझ में नहीं आता कि यहाँ पे गड्ढा है कि क्या है, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी रिस्की एंड दैट वुड लीड टू एक्सीडेंट, और उससे जो है दुर्घटनाएं हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. नॉट ओनली एक्सीडेंट become a concern, but for people living near such areas are also at risk due to the borne of various diseases like dengue. Now another important issue is what, सिर्फ accidents ही नहीं है, it's only accidents are not the matter of concern. Anything the rest is what, you know, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जो इस तरह गंदे पानी इकट्ठा होने से जो बीमारियां फैलती हैं, उसका भी एक खतरा है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग quite risky for the people who are living in such an area. Okay, so in the second paragraph you have literally discussed your problem, you know, in a detailed way. आपने अपनी problem को mention किया in the second paragraph. Now we'll come to the third paragraph, that is the concluding paragraph, conclusion जिसे हमने बोला है. So it is my humble request that you highlight this issue in your newspaper and spread awareness among the public. So we are literally requesting the editor of the newspaper to please mention this issue in your newspaper, highlight this issue in your newspaper and try to spread awareness among the public. लोगों में भी एक जागरूकता उत्पन्न करिए, एक जागरूकता उनके अंदर भी आनी चाहिए इस चीज समस्याओं को लेकर, ताकि वो भी केयरफुल रहें. I hope that the concerned authorities will take up this matter very seriously and appropriate steps will be taken by them. And at last आप क्या कहते हो कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, ओके, द रिलेटेड अथॉरिटीज़ जो हैं, दे विल टेक अप दिस मैटर वेरी सीरियसली और उचित कदम उठाएंगे इस संबंध में. जो भी उचित कदम हो सकता है उनके लिए वो कदम वो उठाएंगे. थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अमर. सो दिस इज़ व्हाट द, you know, this was one example related to letter to the editor. So my dear children, I hope you have understood how to write letter to the editor. In the next video we will discuss about the other types of formal letters. And my dear children, for you there is an assignment, in fact I would say there is a homework, and you are supposed to write a letter to the editor, and that question is given in the description box. Okay, that link is given in the description box and you go to the description box. उस description box में आप जाइए, वहाँ पे आपको link मिलेगा उस homework का, उस पर click करिए, then you will get that homework, and below that homework, below that assignment, you will find another link, और वहाँ पर आप क्लिक करके अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट बाय क्लिकिंग देयर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, click that link, get that assignment, and in that assignment itself another link is given where you can submit your assignment. So I hope that you have understood this letter to the editor, the format, and still if you have any confusion regarding this letter to the editor or formal letter, you can ask me in the comment section and I'll be responding to your queries and I'll be helping you out. So this was all from the first part of formal letter writing, and we'll meet in the next video. So that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.